So what are you seeing on the screen? Number of digits like that. Public list. Number of digits. Fine. Yes, Guruji. So this was question number 9. Okay. Yes. So we are till here it is all right. Now so you can see we are doing question number 9. So from here we have asked the user number, enter the number, then we store that number in this variable n. After that we have made this condition while n modulus 10 is not equal to 0. So what is the purpose of this condition? While मतलब जो n हाँ मतलब जो जो काउंटिंग होगा वो 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए, जो n होगा वो जो अगर रिमाइंडर होगा वो 0 से नहीं नीचे जाना चाहिए। so agar if it becomes 0, then it means that we have come to the last digit, means first Yes. digit. We are taking one by one digit from the end, okay, from the right side, and if the remainder becomes 0, it means we have come to the first digit. Is it clear? Yes, Roger. Yeah. So how we come to one by one? I think this is clear. Here we have used count plus plus. You can see as soon as we get a digit, okay, we count it. Count plus plus. जितनी बार ये while loop चलेगा उतनी बार हमको एक डिजिट मिलेगी, काउंट करते रहेंगे इसको। तो उस डिजिट को हम काउंट करते रहेंगे. काउंट प्लस प्लस. काउंट आई हैव, यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 0. so from 0 it will count. जब पहली डिजिट उसको मिलेगी it will count 1 2 3, and when all the digits are finished, the value of n will become 0. So this while loop will not run, it will come out, and here it will print number of digits are count. Okay. And if count modulus 2 is equal to 0, it means there are even number of digits. Do you follow? Yes, Guruji. Yeah. हाँ If count is divisible by 2, it means the digits are even in number. Okay. And if it is not divisible by 2, means else odd number of digits. So we will run this program once so that you can see. So what are you seeing on the screen? nothing, bro जी. नहीं Guruji. Enter the number. Are you seeing enter the number? No bro जी, no. Okay. Yes. So now I have given the digit 25693. Okay. So you can see number of digits are 5, odd number of digits. Okay, so it has counted. First it takes 3, then 9, then 6, then 5, then 2. इस तरह से लेता जाता है. ये समझ में आ रहा है? हाँ bro जी, समझ आ गया. How it is working? नहीं आ रहा है? कौस्तुभ? आ गया। Divide. Are you understanding this? N modulus 10. Yes bro जी. Yes, Okay, Guruji. so I will once show you the dry run of this program. Okay.
So you can see this Excel sheet is there. Here I put n. After that here is n modulus 10. N modulus 10. And here it is n divided by 10. Okay. So now you have to remember that n is, what is the data type of n? N का data Integer. type क्या है? Integer. Integer. Yes. So now let's say we have taken the number 45638. Okay, this is our number 45638. So here n is 45638. So what will be the n modulus 10? n modulus 10 क्या होगा? रिमाइंडर होगा। हाँ, तो इसको 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 8 means last digit. Okay, n modulus 10 becomes 8. After that what we said? We said that n is equal to n by 10. So if you divide it by 10, what will be the quotient? 4563. 4563. Because it is integer type, so it will take only integer value. It will not take 0.8. Ideally, if you divide 45638 by 10, you should get 4563.8. Okay, but because n is integer type, so it will not take the decimal part, it will only take integer part. Correct? So you see, you get the remaining of the digits, remaining number except 8. Okay, so what it has done now, it got one digit 8, and here it has counted. Here is our count, count. So count becomes 1, value of count becomes 1, count plus plus. So now what is the value of n? 4563. 4563. Okay, and n modulus 10 is 3. Remainder is 3. Okay, so and n divided by 10 will become 456. Correct? And value of count will become 2. Okay, and then again it will come here. The value of n is now 456, and n modulus 10 means you divide by 10, the remainder you will get 6. Okay, so whenever there is modulus by 10, it means we are picking up the last digit. Okay, and when we are dividing by 10, means we are picking up all other digits except the last digit. Clear? So this is the concept. But remember, the n should be integer type. If n is double type, बता दीजिए वो क्या था, वो 10 से मॉड्यूलस लेते हैं, मॉड्यूलस लेते हैं तो लास्ट डिजिट कंसीडर करते हैं, मतलब मॉडुलस। हाँ, मॉडुलस मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस? दैट जब आप मॉड्यूलस लगाते हैं तो उसमें रिमाइंडर बताता है। हाँ, रिमाइंडर बताता है। सो इफ यू डिवाइड इट बाय 10, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? लास्ट वाला डिजिट। हाँ, तो इसलिए वी आर टेकिंग, इट इज टेकिंग लास्ट डिजिट। ओके, सो नाउ हियर इज 456. इफ n is double type, then it will not give these values. If n is double type, it will become 456.3, 4.4563.8. it will take values like that. इसलिए इंटीजर में रखना चाहिए। इसलिए इंटीजर में रखना है। So now n divided by 10 will become 45, and count की वैल्यू फिर से एक बढ़ जाएगी, it will become 3. After that it will take, n becomes 45, and n modulus 10 will become 5. This will become 4, and this will become 4. Okay. Project question. Yes.
तो जी हम n मॉड्यूलस 10 ले क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका तो कुछ काम आ नहीं रहा, क्योंकि हम तो n को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसका जो बच रहा है फिर वो कर रहे हैं हम। सीधा हम लिख देते इफ while n divided by 10 less than equal to greater than 0 लिखने से भी हो जाता। हाँ वो भी सही है। नहीं, यहाँ पे हमने ये किया है ना कि n मॉडुलस 10 नॉट इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है। हमने इसमें कंडीशन लगाई थी ना। नहीं प्रो जी, मैं बोल रहा था कि अगर हम इसको नहीं लगाते, हम सीधा लिख देते while n divided by 10 greater than 0, तब जाके तब भी तो हो जाता ही है। हाँ वैसे भी हो जाता है। हाँ तो You n can do मॉडुलस 10 का इतना वो नहीं होता फिर। नॉट रिक्वायर्ड थिंग। हाँ वही वही पूछ रहा था मैं। करेक्ट। So here n becomes 4. Now n modulus 10 means 4 का 10 को 4, what will be the remainder? 0 4 divided by 10. 4 रहेगा। Yes. 4 रहेगा। 4 And n divided by 10, what will be? 0 What will be the कुछ नहीं value? होगा, 0 होगा ब्रो जी, 0। 0. Yes, correct. Because it will take integer. 0.4 होगा तो ये क्या ले लेगा? 0. 0 And here count value will become 5. Okay. Now the value of n becomes 0. So n modulus 10 will become 0. Okay, so then while will not run, it will break out of the loop. So you see what the final value of count is 5, so it will give the final value as 5. Okay. So we go to the next program, greatest common divisor. All of you understood? जी ब्रो जी। And reverse digit number? जी सी हाँ हाँ प्रो जी। So this is reverse difference. कौन कर रहा है ये? अनुराग ही बचा है, only 3 are there. अनुराग कर रहा है। ये टेढ़ा दिखाई दे रहा है मेरे को। क्या टेढ़ा दिखाई पड़ रहा है? Okay, don't do this because this is recorded class. Okay. Now you can see this reverse difference. The question was that first you have to enter the number from user, then you have to reverse the number and give the difference of the two numbers. So till, should I write the whole program or should I explain this same program? तो जी एक्सप्लेन कर दीजिए ब्रो जी। Okay. हाँ प्रो जी। Okay. So till here it is clear. Enter the number, जी and ब्रो we जी। have stored the number in n, variable n. Now we have took another variable k. K is equal to n. Okay. Why we have taken k? Because we need n in the end to find the difference. So we are taking another variable k, and using k we'll do all the operations to find the reverse of the number. So this coding, it should be remembered to you. You should remember this coding, that this in this way we find the reverse of a number. Okay, I will show you the dry run also, but first you should memorize this coding. So first you have to write while k is not equal to 0, then we write d is equal to
k मॉडुलस 10 मींस d के अंदर क्या स्टोर होगा? जो मॉडुलस का वैल्यू होगा, रिमाइंडर. हाँ, Okay. रिमाइंडर. Then here is the variable r. R is Hmm. equal to r into 10 plus d. This line is used to store the reverse of the number. Okay, r is equal to r modulus 10 plus d. And then again k is equal to k divided by 10 means we reduce the number by 1 unit. Okay, so then it finally r के अंदर रिवर्स वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाती है. कैसे होती है? वी विल सी इन द ड्राई रन. ओके, r के अंदर रिवर्स वैल्यू स्टोर हो जाती है. देन यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है c इज इक्वल टू मैथ abs r माइनस n. abs क्यों लगाया मैंने? एब्सोल्यूट वो डिफरेंस निकालने के लिए. Because we are not concerned with sign, we are just concerned with difference. Okay, इसमें एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा था, तो हो सकता है आर एन से छोटा हो सकता है आर एन से बड़ा हो. ओके, सो वी हैव यूज दिस ABS. So in this way it is printed. So now you'll see the output of it. प्रभु जी एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब कि उसका साइन हम लोग कंसीडर नहीं करते. अच्छा, मतलब अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव ही कहलाएगा. अगर नेगेटिव में कोई नंबर है तो वो पॉजिटिव ही कहलाएगा. हाँ, नेगेटिव अगर नंबर है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया 6 3 5 दिखाई नहीं 8 दे 1. रहा. ओके ओके, दिखाई नहीं दे रहा. अभी भी नहीं दिखाई दे रहा. हाँ, 6 3 5 8 9. So you see it has printed reverse of the number is 98536. ठीक है, नंबर को इसने रिवर्स कर दिया. एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द नंबर इज दिस. उसका डिफरेंस निकाल के दे दिया. ठीक है, so we will see the dry run of this program. So here is n modulus 10. n की जगह we took k. Okay, let us take here k, then k modulus 10, then here is r is equal to r into 10 plus d. Okay, then here we had k is equal to k divided by 10. मुझे स्क्रीन में कुछ आ नहीं रहा. Okay, and here it is d. Okay, so let us our number is this 4 5 6 3 8. This is our number. So d is equal to k modulus 10 means remainder. Remainder means 8. r is equal to, now r की वैल्यू हमने पहले 0 ली है. ठीक है, r is equal to 0 है. First we have taken r as 0. So r is equal to r into 10 plus d. So 0 into 10 plus d. So कितना हो गया? 8. Okay, and then k is equal to,
So it will give the remaining value 4, 5, 6, 3. Okay. Now here again it will take, now it will take k modulus 10 means remainder is 3. Here is the value of k. 4, 5, 6, 3 का मॉडुलस लिया तो कितना हो गया? 3 हो गया. Then r is equal to r into 10 plus d. देखो into 10 से क्या हो रहा है? That 8 is shifted towards left side. Okay, tens position. अगर tens position में होगा तो hundreds position में shift हो जाएगा. hundreds में होगा तो thousands में shift हो जाएगा. By 10 ये shifting कर देगा. So therefore we have multiplied it by 10. Okay. So r is equal to r into 10 means 80 plus 3. 80 plus 3 हो गया. So 80 plus 3 is equal to 83. Correct? And here you will get 4, 5, 6 remaining 10 से divide कर दिया तो. And again you will get remainder here 6. Now value of k is 4, 5, 6. And here what will do? R into 10 means 830. 830 plus 6. So it will become 836. And k will become 45. So k will become 45. A remainder will be 5. And here will be 836 into 10 means 8360 plus 5 is equal to 8365. And here you get 5. Okay. And remainder is 4. So you get here 83650 plus 4. So you get final value as 83654. Clear? So you see the number is just reversed. 83654. Okay. So have you got your new timetable? From Monday you'll have new timetable. No problem. No. You haven't got. Okay. So I have taught all of you nested loop. You know what is nested loop? Yes, what is nested loop? Nested loop. Repeat होते रहता है. पैटर्न बनाते हैं. हाँ? पैटर्न बना रहे ट्रायंगल जैसा. हाँ, वो nested loop का यूज होता है उसमें. पर what is nested loop? Nested loop पता नहीं. Nested loop means when you use a loop under a loop, loop inside loop. That is called nested loop. Repetition of loop. हाँ, yes. Just like for loop है. For loop के अंदर we have included another for loop. So that is called nested loop. So one thing I want to ask, you are seeing this screen, seeing this program? Yes, sir. So can you convert this while loop into for loop?
करेंगे। See, you can see how it is done. First of all, you remove this while, you put here for. Okay. Or okay. Then there is initialization. So initialization is first in the for. So you write here k is equal to n. All right. This is the condition. K is not equal to 0. This is the condition. Okay. K plus plus. Then it is not k plus plus here. Here k is equal to k divided by 10. This is changing the value of k. Yes. Okay, तो यहाँ पे होगा k is equal to k divided by, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं in your board exam to convert one loop into another loop. 15 मार्क्स का नहीं, 15 मार्क्स का नहीं आता है, फिर भी 3-4 मार्क्स it comes. अच्छा, Are you seeing? Yes, sir. So we have converted here k is equal to n, k not equal to 0. This is the condition. So here we had already done assignment, but we'll remove it. यहाँ पे केवल int k कर दिया. Now we'll compile it. So it is not showing any error. Now we'll run it. So you can see the screen. I am typing the number 2356. So here it has not taken. Maybe there is some logical error. So there are 3 types of error. So what do you understand by logical error? तो जी वो कुछ प्लस माइनस में अगर ब्रैकेट नहीं लगाया, जहां पे हम प्रोग्राम के लॉजिक में कोई गड़बड़ी कर देते हैं, मान, सो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर. और एक रन टाइम एरर होता है. हाँ, रन टाइम एरर मतलब रन करते समय अगर ये प्रोग्राम रुक जाता है, कुछ एरर शो करता है, सो दैट इज कॉल्ड इन लॉजिकल एरर इट विल नॉट शो एनी एरर. Okay, it will say all right, but your program, the desired result will not come. Means there is mistake from our side in the logic of the program. सर एक डाउट था. Yes. सर जी हम लोगों ने फॉर लूप में हम लोगों ने सब कुछ स्टेटमेंट लिख ली केस नॉट इक्वल टू 0 वगैरह, तो फिर हम लोगों ने नीचे दोबारा क्यों लिखी उसको? हाँ, ये नहीं लिखना है ये अंदर. और ये तीसरा बताऊं? तीसरा क्या? सिंटैक्स एरर. हाँ, दैट इज सिंटैक्स एरर. क्या पूछ रहे थे ये? हो गया. So let's see. नो सिंटैक्स एरर. सिंटैक्स एरर था मतलब. Again it is not running, there may be some error. तो हम लोगों ने while लूप नहीं लगाया दोबारा. while लूप नहीं लगाया दोबारा. हाँ, while loop हम we are trying to do it with for loop. Okay. So k is equal to n, then d is equal to k. K modulus
if k is not equal to 0. So it is not running by for loop. I'll try to do and I'll show you afterwards because it will take time if I try to debug it now. So another thing which I wanted to tell you about break statement and continue statement. So have you done that? Do you know break statement? हाँ प्रभु जी, जब स्विच केस करते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट का करते हैं जिससे कि उस प्रोग्राम से अगर सही नहीं है तो उससे जंप कर जाए। हाँ, और कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर लगाएंगे तो शायद मतलब वो दोनों को कंबाइन कर देगा। क्या करेगा कंटिन्यू स्टेटमेंट? स्किप कर देगा प्रोसेस। हाँ, एक कर देगा दोनों को। हाँ, जैसे मान लीजिए स्विच केस में पहले वाले केस में हमने लिखा था कि कुछ ये है, अगर ये नहीं है तो ब्रेक वाले में हट जाता है, लेकिन कंटिन्यू में ये करके दूसरे स्टेप में चला जाएगा, मतलब दूसरा जो स्विच है करेक्ट काम करने लगेगा। सो दिस इज द डिफरेंस। ब्रेक अगर ब्रेक लगा होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। हाँ, बट इफ देयर इज कंटिन्यू इट मींस उस वाले स्टेप को छोड़ के वो अगले स्टेप से कंटिन्यू करेगा। ओके, it will skip that particular step and continue from the next step. So यहाँ पे we have made a small program, so let us try to see the difference. So you can see after 3 I had put break. If I is greater than 2 तब मैंने ब्रेक लगाया था, तो आफ्टर 3 इसने बाकी वैल्यूज प्रिंट नहीं की। आउटर लूप था 1 to 5, इनर लूप था 1 to 3. So inner loop is printed up to 1 2 3 times. 4 and 5th outer loop is not printed. You can see the program again. So you can see outer loop is 1 to 5 and inner loop is 1 to 3, and after the inner loop I have put this condition: if I is greater than 2 then break. Okay, so it will print the inner loop. First the value of I will be 1, so inner loop will run 3 times. Then the value of I will be 2, then again inner loop will run 3 times. Then the value of I will be 3, again it will run 3 times. But after that it will come here, it will see I is greater than 2, so it will break out. Okay, so it will not print it again. And after every inner loop there is a star printing. After one inner loop this star line will be printed. Second inner loop this star line will be printed. Okay, third inner loop में क्या हुआ? It is break. Before star line से पहले देखो break लगा है, so इसने थर्ड बार star line को print नहीं किया. Okay, so now we'll put here continue. Instead of break we'll put continue.
So now I'll share the screen, you can see the output. So now you can see the output 1 2 3, then again 1 2 3, then it has skipped that break part, this line part. Okay, after line it is getting continue. You see what is happening, that I is greater than 2, then it is not printing the line, it is skipping that line. Okay, it is skipping that line. So you see है, ये जो कंटिन्यू है, this is not printing this this thing. फॉर लूप में उसके बाद क्या बचा है, ये प्रिंट स्टेटमेंट आउटर फॉर लूप में. ओके, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, लाइन स्टार लाइन प्रिंट करना था, पर क्योंकि कंटिन्यू लग गया तो उसने इसके बाद स्किप कर दिया. क्या वैल्यू हो गई, 4. अगर मान लो मैं इस कंटिन्यू को, आई रिमूव दिस कंटिन्यू फ्रॉम हेयर, यहां से मैंने कंटिन्यू हटा दिया, नाउ आई विल पुट दिस हेयर.